two-day strike of bank employees has ended today. Bankers across the country were on strike, opposing the move of the central government to privatize public sector banks. The bankers offer their explanation, and then the government has offered its own. Whose explanation is more convincing? Could this be a move where once again the government is trying to steamroll railroad changes in the name of reform, just like it did in the case of the farmers' reform? Or is this actually the need of the hour? We will discuss this with a group of experts later on in the show, where we will get you all the aspects of understanding this strike. The bank crisis explained on Reality Check. But first, let us quickly listen in to what the bankers have to say. जो आम जनता है उसके हित के अंदर जो ये प्राइवेटाइजेशन जो घोषणा की गई है वो हितकारी नहीं होगी, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि बड़े-बड़े जितने भी बैंक थे वो सभी पूंजीवादी घरानों के, औद्योगिक घरानों के चुंगल के अंदर थे, और उसमें जो आम आदमियों का पैसा जमा होता था उसका इस्तेमाल जो है वो अपने व्यापार को बढ़ोतरी के लिए करते थे, और आम ग्राहकों को जिनका पैसा उसके अंदर जमा था उनको लाभ नहीं पहुंचता था. Our slogan is people's money should be utilized for the people's use. It should not be for the private loot. जानते हैं कि हमारी 2 दिन की सैलरी कटेगी, बट ये जो चीज है ये हमारे ही फ्यूचर के लिए है. प्राइवेटाइजेशन हो गया तो ये सैलरी जो मिल रही है ना ये भी नहीं मिलेगी हम लोगों को. वी आर सेविंग अ फ्यूचर. बैंक को बेचे जा रहे हैं, सारी PSUs बेचे जा रहे हैं. ये कोई दुख नहीं है कि गवर्नमेंट का कि हर एक कुछ बेच दिया जाएगा. हम लोग जो है सोशल मोटिव से काम करते हैं. हम लोगों का मोटिव एक प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन पब्लिक बैंक्स को प्राइवेटाइज करके एक प्रॉफिट मोटिव थोपा जाने वाला है, जो बहुत गलत होगा. एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए गलत होगा. बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो इसी मोटिव के साथ हुआ था कि देश के गरीब तबके तक सारी सुविधाएं पहुंचे, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट तक रह जाए. और आज सरकार वापस से वही वाला दौर लाना चाहती है, मतलब हमको फिर से गुलामी की तरफ धकेलना चाहती है. पहले हम अंग्रेज सरकार के गुलाम थे और आज हम सिर्फ एक चंद कॉर्पोरेटों के गुलाम होकर रह जाए. आप अपना जनधन योजना ले लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ले लीजिए, ट्रांसफर ले लीजिए. ये सारी चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू ही पहुंचती हैं आम लोगों तक. गांव में कोई भी आप एक्सिस बैंक की या ICICI बैंक और यस बैंक की ब्रांचेस नहीं देखेंगी, बट आप एक रूरल एरिया में चली जाइए, वहाँ आपको SBI, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो भी नॉर्थ और साउथ का उनका है ब्रांचेस, उसके अकॉर्डिंग उनको आपको पब्लिक सेक्टर बैंक का ही पहुंच मिलेगा वहाँ पे, जिसके थ्रू लोगों को बैंकिंग की सुविधा दी जा रही है. दिस इज जस्ट इंडिकेटिव टू द स्ट्राइक. इफ द गवर्नमेंट डजंट लिसन टू अस, we are going to march ahead with lot of protests and strikes which may be indefinite, for an indefinite period. Across the country, bank employees were protesting. Why? They are standing against the privatization of public sector banks. They say that privatization will cause bank employees to either lose their jobs or the job security they currently have. In particular, they are worried that instead of being government employees, they may become tied to short-term contracts. They say that public sector banks are much more likely to service low-income, rural borrowers, savers and small businesses. After privatization, interest rates may go up and bank branches in remote rural areas may be shut down to cut costs. They say that public sector banks implement government schemes like the Jan Dhan Yojana and have provided a fiscal stimulus amid the COVID pandemic, something the private sector is unlikely to participate in. Finally, they say that many public sector banks are turning an operating profit, which is profit before interest and taxes are paid out, implying that employees have worked efficiently to keep costs low. They are questioning why privatization is needed at all. So what triggered this? The Indian government has made promises of divestment in the past, but not really delivered. But in the budget announcement in February, Nirmala Sitharaman set very ambitious targets for privatization, in particular of public sector banks. She said two public sector banks will be privatized within the year. She did not specify which out of the 12 public sector banks this will be, leading to justified worry within the sector as a whole. So far, the government has not given clear answers to questions about bank privatization. But today, Nirmala Sitharaman finally spoke about it in a press conference. She said we want banks to meet the aspirations of the country, that not all banks are going to be privatized. She said that the interests of existing employees will be protected at all costs and that privatization will lead to more equity and allow banks to scale up their operations and employ even more people.